That is when you forego your current money, or you are ready to put in your money for some value addition in anticipation of growth of the money. You part with the current money and you put it in some investment opportunity. Then this trade-off between the current money and future money is in anticipation of getting a good return and growth of the principal amount. So investment itself involves a lot of homework, in the sense that when you have multiple investment options before you, you critically analyze each and every option on the basis of the risk involved and the return expected. So this being the parameter for any evaluation or any analysis of the available alternatives before you, we start evaluating any investment alternative using the trade-off between risk and return involved. So the general rule in investment is the higher the risk, higher is the expected return. So the more risk you take, it is always in anticipation of above average return on the investment we made. So risk and return have a direct relationship. They have a upward sloping relationship, which can then be shown through this graph. So on the x-axis you have risk. Risk is measured through standard deviation. Standard deviation आपको क्या बताता है? Can anyone tell me what standard deviation is? What does standard deviation tell? Which article? Your voice is not clear. There's some disturbance. But I think you आप chat box use करो कार्तिक एक बारी उसमें put in करो. By that time, anyone else? I think you were correct. The standard deviation is telling you about the dispersion around a mean value. So, how much fluctuation is around the mean value, that is measured through standard deviation, and the risk involved in the investment is also measured through the standard deviation. If anyone wants to add anything to this, because I think all of us have done standard deviation, yes. How widely the data is distributed. So yes, this is a measure of dispersion. किस रेंज में कितने वाइडली आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है और कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है अराउंड द मीन वैल्यू, दैट इज मेजर्ड थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन. सो रिस्क को मेजर करने के लिए दिस टूल इज यूज्ड. On the x-axis you have risk, on the y-axis you have return. The red line is giving you the trade-off between risk and return. If you are happy assuming a low level of risk, like say you want to go for fixed deposit or putting your money in savings account, then you are ready to earn a low return also. But if you want a higher return, you go to invest in the stock market, then you are also assuming higher risk. So there's a direct relationship between the two. Coming back, low levels of uncertainty are associated with low potential returns, whereas if you are ready to take high risk, then there is a possibility of earning higher potential returns. Now, risk is defined as the chance
that your actual return will be different from the expected return. So, which means, say, I invest in share of TCS, and I expect that in 1 year the return I will be getting is 10% on the investment made. Okay. Now, risk is that this investment can at the end of the year fetches me 5% return. This is one option. The other option is that at the end of the year, this investment fetches me 15% return. Now, there is a difference between the expected return and actual return, and it is both ways, on the positive side also and the negative side also. Both these situations are risk. But in finance and when we study, we generally associate risk with something which is negative. तो जो हमारा फोकस होता है वो इस पॉसिबिलिटी पे होता है that I expected 10% return and I get 5% return. But yes, इन टोटलिटी अपवर्ड फ्लक्चुएशन भी जो है, जो पॉजिटिव साइड फ्लक्चुएशन है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ रिस्क, दो we will be focusing on the negative aspect of risk. Now, this is the probability that what you expect and what you get will be different. On the other hand, return is the gain or loss you are making from the investment over a particular period, in a particular period. So, there we consider two things. Again, I am taking the example of this share. When I purchase this share, I expect my return in two forms. One is, hypothetically, the share is of rupees 100 at the time of purchase, and I have a time frame of say 5 years that I will be investing in this share, or I'll be holding this share for 5 years. So what am I expecting in return? I expect some dividend in each of these years. So this is one return that the investor expects. And the second is the capital gain. That is when I go to the market at the end of the fifth year to sell this share, then it should give me some capital gain. यानी कि जो मेरा selling price हो, मेरे purchase price से ज़्यादा हो. So it is fetching me something above 100 rupees. So two types of returns are expected. One is the income. ये शेयर की बात थी, तो हमने डिविडेंड एक्सपेक्ट करा. अगर हमने डिवेंचर में इन्वेस्ट करा होगा तो फिर हम वहां पर इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं. वहां पे तो एक तरीके से श्योरिटी ही होती है रिटर्न की. So depending on the type of investment you are making, you expect return in the form of some regular income and a capital gain at the end of the investment period. Moving ahead, when we talk about investment, we talk about portfolio and we talk about diversification. So these are two terms we come across a lot. One is portfolio and one is diversification. So let's first talk about portfolio. What is portfolio? Anyone heard this term? So many of you are commerce students. What is a portfolio? Class. None of you have heard about what portfolio is or portfolio as a term. None of you have heard this term. Strange. How is that possible? Commerce students किसी ने portfolio term ही नहीं सुनी हुई? Okay then, yes, good. Subway, it is the collection of investments that we make. It is the basket of investments that we invest in. So, over my lifetime, I invest in real estate. मैं सेविंग्स कर रही हूँ तो मैं अपने पीपीएफ अकाउंट में रख रही हूँ. कुछ पैसा मैंने अपनी सेविंग्स का अपने बैंक अकाउंट में रखा. कुछ मैंने
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा, कुछ मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा. ऑल दीज कलेक्टिवली मेक माय पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. और हम फाइनेंस में कहते हैं दैट इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल योर मनी इन वन इन्वेस्टमेंट, spread the investment. So portfolio is the basket of securities, basket of investment that you are making. And the basic rule in finance is don't put all your eggs in one basket. So instead of putting all your money in a single investment, it is always better to spread the investment, because that will lead to diversification and that will help in reduction of risk or management of risk. How? If my investment A is giving some loss, then at least I have investment B and C, which most probably give me some profit. So loss in one investment can be counter off by the profit in the other investment. So this way diversification helps us in minimizing the risk involved in the entire investment activity. Now, it is always best to diversify using investments which have very low correlation with each other. Now, we are doing all these concepts theoretically only. अभी ये जो correlation और जो मैंने आपको बेसिकली कैसे हम बिल्ड करते हैं पोर्टफोलियो, दिस इज बीइंग डन theoretically only. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कोरिलेशन अगर कम होगा इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शंस है हमारे पास, तो कोरिलेशन आपको क्या बताता है? कोरिलेशन ये बताता है कि कैसे दो वेरिएबल्स हैं वो रिलेटेड हैं, कौन से डायरेक्शन में रिलेटेड हैं. तो अगर मैंने तीन सिक्योरिटीज उठाई या मैंने दो सिक्योरिटीज उठाई ए एंड बी, अगर इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, इसका मतलब क्या है? अगर ए का प्राइस बढ़ेगा तो बी का प्राइस भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा. इफ ए फॉल्स देन बी विल आल्सो फॉल. So such kind of securities are not serving any purpose. पॉजिटिव कोरिलेशन की वजह से डाइवर्सिफिकेशन का मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा. मुझे बेनिफिट कब होगा? जब एक अपसाइड है, दूसरा डाउनसाइड है, तीसरा अपसाइड है या न्यूट्रल है. जब आपस में ये सिक्योरिटीज लो कोरिलेटेड होंगी या नेगेटिव कोरिलेशन होगा, तब फायदा क्या होगा कि अगर एक फॉल कर रहा है तो दूसरा अप होगा एंड माय रिस्क विल बी मिनिमाइज्ड एंड आई विल गेट some return from the investment made. So it's not that I will run into losses, because with positive correlation अगर प्रॉफिट है तो वेरी गुड, वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, पर अगर लॉस भी होगा तो भी इस केस में वो मल्टीप्लाई होगा. जब दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन होगा या बहुत कम कोरिलेशन होगा, then these securities will give you the benefit of diversification. So it is always better to diversify across these securities that are not perfectly correlated or that do not have positive correlation, because then that is not giving you any benefit. So, moving ahead, return, as I told you, is the gain or loss that you are making on investment, and return is always risk free rate plus risk premium. तो अगर आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है, क्योंकि वहां पर लॉस या डिफॉल्ट का चांस नहीं होता. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं, RF. तो हम जब भी रिटर्न किसी और इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है. सो माय रिटर्न इज एक्चुअली रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस
any additional risk that I am taking, and premium means जो additional risk के लिए मुझे return मिला. इसका मतलब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे रिटर्न 7% है और मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करा, तो जो मैं टीसीएस की बात कर रही थी, तो उसका 10% रिटर्न मेरा कैसे डिवाइड होगा? 7% तो रिस्क फ्री रिटर्न है and 3% is the return for the risk I am taking up. गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो जीरो रिस्क है, शेयर में इन्वेस्ट करने पे रिस्क है, तो उस रिस्क के लिए मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज नोन एज द रिस्क प्रीमियम. So this is risk return trade-off. Now return and risk. First we'll see both the concepts theoretically and then we'll see how we calculate the risk and return on individual security and portfolio. So let's start with the return. Return is a performance measure used to evaluate the efficiency of an investment. And then again, it's not only standalone investment, but when I have alternatives before me, then return can be used to make a comparison across the different investment alternatives available. Return on investment is always calculated on the कॉस्ट दैट इट इज इन्वॉल्व. तो आपने कितना इन्वेस्ट करा, क्या आपकी कॉस्ट थी इन्वेस्टमेंट की, और उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिला है, दैट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. So there are various methods to calculate the return which we will be doing. The easiest being the holding period rate of return. So I hold a share, I hold a debenture, or I hold an asset for 1 year or for 2 years. तो उस टाइम पीरियड में मैं सिंप्लिसिटी के लिए अभी शेयर्स ले रही हूँ, तो एक ईयर के लिए आपने शेयर होल्ड करा, तो उस ईयर में आपको कितना डिविडेंड मिला, और फिर जब आप सेल करने गए तो आपको कितना कैपिटल गेन मिला. कैपिटल गेन क्या है? P1 माइनस P0. 100 रुपए का शेयर खरीदा, 110 में सेल हो गया, तो मेरा कैपिटल गेन हो गया 10 रुपए, और उस पे मुझे 2 रुपए डिविडेंड मिला, तो D1 प्लस कैपिटल गेन अपॉन द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100. दिस विल गिव मी द rate of return on the investment for one period of holding. So this is one way of calculating the return on the investment made. Apart from this, we'll be looking at the other formulas also. तो ये तो आपका एक्चुअल रिटर्न का है. फिर एक ये होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट से पहले इवैल्यूएट कर रहे हो कि फ्यूचर में एक सिक्योरिटी मुझे कितना रिटर्न देगी, तो वहां पर प्रोबेबल रिटर्न आ जाता है. So that will have another formula, but now, as of now, we are seeing the concepts theoretically. So what return you are getting on the investment made? P0 being the cost of the investment made, that return is the return on investment. Coming to risk, so as already told, risk is the fluctuation or the possibility that your actual return will be different than the expected return. So, what causes risk? Why is there risk in every investment opportunity? The reason for risk being there is factors which are related to the individual firms or macro level factors. तो अब आप इन्वेस्ट करने के सोच रहे हो, से मारुति सुजुकी में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो कुछ रिस्क होगा जो इंटरनल कंपनी से रिलेटेड होगा, और कुछ रिस्क होगा जो एक्सटर्नल है, जो मैक्रो लेवल है इन नेचर, which is something which is beyond the control of the organization. So मारुति के जो शेयर आपने परचेज करा,
उसमें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होगा कि कंपनी की इंटरनल वर्किंग पॉलिसीज क्या हैं, कंपनी कैसे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले रही है, कंपनी कैसे रिसर्च करके अपग्रेडेड मॉडल्स ला रही है टू सूट द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. So all these factors are internal to the company. But there are some factors at the macro level. जैसे बजट आता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए ज्यादा पुश दे रही है गवर्नमेंट. उस वजह से जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है या कुछ टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, कॉर्पोरेट टैक्सेस. तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये एक सिंगल कंपनी के बियॉन्ड है, ये गवर्नमेंट ले रही है एट द सेंटर. So these factors come under the macro level risk which are faced by the firm. So systematic risks are which are macro in nature, which are beyond the control of a single firm, whereas unsystematic risks are which are micro in nature, जो एक firm single handedly control कर सकती है. तो एक बार ये सारे रिस्क देखते हैं, ब्रीफली ओवरव्यू करते हैं कि क्या क्या रिस्क होते हैं. तो सिस्टमैटिक विच इज मैक्रो रिस्क इज because of the factors which are external to the firm, which are uncontrollable for a single firm. So such kind of factors fall into three categories: interest rate risk, any risk which is due to interest rate fluctuations; मार्केट रिस्क, तो मार्केट में जो मार्केट सेंटिमेंट है, मार्केट में डिमांड है गुड्स की, वो सब जब फ्लक्चुएट होती है तो वो सारी कंपनीज को इम्पैक्ट करती है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट नहीं करती. और लास्ट इज परचेजिंग पावर रिस्क. तो जब इन्फ्लेशन होता है देन अगेन इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी इनपुट्स हैं, अगर उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो वो अगेन रिस्क का रीजन है, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट विल इम्पैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द फाइनल गुड. So these things then move beyond the control of a single company. अगर इनपुट्स की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो वो सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को इम्पैक्ट करेगी. इट इज नॉट ओनली द सिंगल कंपनी इन क्वेश्चन. So systematic risk is macro level risk. Market risk is one type of systematic risk. One is interest rate risk, which is due to variations in the interest rate. Market risk is the fluctuations that take place in the market, again beyond the control of a single company. So today if the market is on the downside, then there is no single company which is responsible, or there's no single company that can control this movement in the market. Inflation, as I've already told you. एंड देन देयर इज ऑल्सो एक्सचेंज रेट रिस्क इन्वॉल्व. अगर आपकी कंपनी डील कर रही है कुछ फॉरेन पार्टनर्स के साथ या बाहर की कंट्रीज से भी इनकम आ रही है, तो जैसे जैसे करेंसी फ्लक्चुएट होती है वैसे वैसे आपकी इनकम में भी इम्पैक्ट आता है. तो फॉर योर नॉलेज से दिस इज हाउ द foreign exchange rate is given. So $1 is equal to rupees 75. So what I know is today if I have to buy dollar, then I will have to pay rupees 75. This is times 0. Say after 10 days, this value becomes $1 is equal to 73 rupees, or the other case can be $1 is equal to 76 rupees. अब ये दोनों ही सिचुएशंस क्या दिखा रही हैं कि कोई भी साइड पर फ्लक्चुएशन हो सकता है इन दी रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट. दिस इज रिस्क, बोथ साइड रिस्क है. पहला केस क्या है कि
पहले आपको $1 के लिए 75 रुपीज देने थे, अब $1 के लिए आपको कितने रुपीज देने हैं? 73 रुपीज। कैन एनीवन टेल मी विच करेंसी हैज appreciated and which has depreciated? कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर बनी और कौन सी वीक हुई है इस केस में? Earlier you were giving 75 rupees for $1 and now you're giving 73 rupees for $1. Indian rupee appreciate हुआ है या depreciate हुआ है? मैम अप्रिशिएट। Very good. Indian rupee has appreciated because now I can buy the same dollar with a lower amount of Indian rupees and dollar has depreciated. Now this benefits the people who are importing. ओके, मैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जो मेरी कंपनी को जो पहले इम्पोर्ट्स 75 रुपीज के हिसाब से $1 के लिए पे करना था, अब 73 रुपीज में भी मैं डॉलर बाय कर सकती हूँ। तो मैं अगर यूएस मार्केट से कुछ इम्पोर्ट कर रही हूँ तो अब माई कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट विल फॉल। दिस इज बेनिफिशियल फॉर मी, बट दिस बिकम्स नेगेटिव फॉर एक्सपोर्टर्स क्योंकि वो डॉलर में अर्न कर रहे हैं। तो पहले जब वो $10 ला रहे थे तो वो 750 रुपीज मिल रहा था। अब जब वो $10 लाएंगे और इंडिया में उसको कन्वर्ट करेंगे तो उनको 730 रुपीज मिलेंगे। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल ऑलवेज बेनिफिट द इम्पोर्टर बट इट इज अगेंस्ट द एक्सपोर्टर। इज दिस पॉइंट क्लियर? Wherever you feel that things are not making sense, please stop me there because you're studying these concepts for the first time, so it might be a bit confusing. ऑन दी अदर हैंड जो ये वाला केस है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो एप्रिशिएट हो रहा है वो डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और जो डेप्रिशिएट हो रहा है वो आपका इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो इस केस में एक्सपोर्टर को तो फायदा है, पहले $1 पे 75 रुपीज मिल रहे थे, अब जब वो डॉलर कन्वर्ट करेगा उसको 76 रुपीज मिलेंगे, पर इम्पोर्टर के लिए यहाँ पर लॉस है क्योंकि नाउ द इम्पोर्टर विल हैव टू पे मोर रुपीज टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स। So this is the exchange rate risk. This is the fluctuation that takes place in the exchange rates on daily basis, and this is again beyond the control of a single firm and one of the major factors that contributes to the systematic risk in the investment. Any question in this? Okay, coming to the micro level risk और the unsystematic risk, तो ये जो risk है ये internal है firm के लिए, these are controllable by the firm. तो अगर मुझे लगता है कि टीसीएस के मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं टीसीएस में इन्वेस्ट ना करके विप्रो में इन्वेस्ट कर लूं या माइंड ट्री में इन्वेस्ट कर लूं। So I am able to avoid this risk just by avoiding the company which has some unsystematic risk. So unsystematic risk is for a particular organization. So say there is some risk related to a particular company or industry. Like I was talking about Maruti, Suzuki, and the same applies to Honda, Hyundai, टाटा मोटर्स। अगर गवर्नमेंट आज ऑटोमोबाइल्स डीजल और पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है तो सारी कंपनीज जो इस सेक्टर में फॉल करती हैं वो इम्पैक्ट होती हैं। दिस इज बिजनेस रिस्क विच इज applicable to all the firms in a particular sector or industry. So as an investor, I can avoid this risk by not going to the automobile sector. Instead of that, I start investing in the IT sector. So unsystematic risk is diversifiable. I can avoid that risk. But systematic risk is prevalent everywhere. It is
non-diversifiable. देन इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? जो भी फाइनेंसिंग पॉलिसीज हैं उससे रिलेटेड जो भी रिस्क होता है, एंड स्पेशली दी डेट इक्विटी रेशियो, कितना डेट है फर्म के पास एज कंपेयर टू इक्विटी, दैट मेक्स द फाइनेंशियल रिस्क। हायर इज द डेट, मोर रिस्कियर इज द फर्म। तो अगर मैं रिसेंट केसेस में बात करूं, वोडाफोन की बात करूं, तो if you are following the news, government of India is buying a good stake in Vodafone. So around 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय कर रही है वोडाफोन में। बट वोडाफोन के साथ प्रॉब्लम क्या रही है? वोडाफोन ओवर द इयर्स उनका डेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। so that makes the company a risky venture. तो ऐसी कंपनी को अवॉइड करके आई वुड प्रेफर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी which has a decent debt equity ratio and over the years it has shown growth in the revenue. So financial risk is based on how debt equity ratio of a company stands. As higher the debt, again higher is the risk for the firm, higher is the default risk for the firm. नेक्स्ट इज ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? कंपनी के ऑपरेशंस में कुछ ब्रेकडाउन आ जाए, उसकी वजह से जब कंपनी की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है, देन दैट इज नोन एज ऑपरेशनल रिस्क। सो एग्जांपल्स फॉर ऑपरेशनल रिस्क इज से स्ट्राइक इन अ कंपनी, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाती है, 4 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद हो जाता है, that will have a huge impact on the earnings of the company. But this is again something which is specific to a single firm, and hence this risk can be diversified. This is part of the unsystematic risk. So in this graph you can see कि जो systematic risk है, number of securities in the portfolio are given on the x-axis, on the y-axis you have the risk. तो ये आपका टोटल रिस्क है, ये वाला कर्व। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इंक्रीज करते हो अपने पोर्टफोलियो में, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल योर मनी इनटू सिक्योरिटीज यू इंक्रीज इट टू 10 सिक्योरिटीज, तो आपका टोटल रिस्क जो है वो फॉल कर जाएगा। सिस्टमैटिक रिस्क हमेशा सेम रहता है। दिस पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस शोज दैट जितनी भी सिक्योरिटीज ले आओ, सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता। बट अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड, एंड देयरफॉर total risk, which is the sum total of systematic plus unsystematic risk, falls when the number of securities in the portfolio are increased. So the best tool to reduce your risk is to diversify your investment, add more securities to your